ठान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। तो जो बच्चे रह गए हैं तो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आवर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इज आल्सो प्रोवाइडिंग स्कॉलरशिप टू द सीए स्टूडेंट्स। अब सर इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कैसे करें, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एंड इस स्कीम के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, so let us discuss in detail. So in this scholarship scheme there is two type of category. First one is need based scholarship for EWS students and the second one is merit cum need based scholarship. So first of all we will talk about the need based scholarship provided to economically weaker section students, that is EWS students at intermediate level. So the eligibility criteria for this scholarship is, first one is students who are registered for CA intermediate course either through foundation route or through direct entry route. And the second criteria is that income of parents should not be more than 3 lakh rupees per annum. So these are eligibility criteria for the said scholarship scheme, and now we are going to discuss the benefits available under this scheme. So the first benefit is that scholarship amount of 1500 rupees per month will be rewarded to the needy students based on your selection in the scholarship for the period of 9 months, which means that आपको 1500 rupees per month मिलेंगे for the period of 9 months अगर आपका इस स्कीम में सिलेक्शन हो जाता है। And the exciting thing is that if you have completed your OC and IT training within 9 months of registration, then in that case additional scholarship for 3 months will be granted to the students. Apart from this, if you have cleared any one group of intermediate course within 12 months of registration, then scholarship will be rewarded for additional 3 months to the beneficiary. So these are the benefits available to this scheme. अब हम बात करते हैं नीड बेस्ड स्कॉलरशिप जो ICAI प्रोवाइड करता है एट सीए फाइनल लेवल। तो उस केस में क्या एलिजिबिलिटी है, उस केस में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नंबर 1 ये है कि आपको सीए फाइनल का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपके पास। सीए फाइनल का रजिस्ट्रेशन मस्ट है, उसके बिना आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। एंड द सेकंड वन इज दैट इनकम ऑफ योर पेरेंट्स शुड बी अप टू 3 लाख रुपीस, नॉट मोर देन दैट। उसमें क्या बेनिफिट्स है, उसमें आपको स्कॉलरशिप अमाउंट 1500 रुपीस पर मंथ रिवॉर्ड की जाती है, और जो कि उसका पीरियड होता है मैक्सिमम 30 पीरियड्स और रिमेनिंग पीरियड ऑफ योर आर्टिकलशिप whichever is lower. So now we can talk about the another category of this scholarship scheme, which is merit cum need based scholarship. So what is the eligibility criteria for this scheme? Let's discuss the criteria to be met by the students to get eligible for this category of scholarship scheme. So the first criteria is that student must register for CA final course before making application for this scheme. The second one is that जो कि अब ये merit based वाली scholarship है, तो यहाँ पास you should be a rank holder, which means that they should be rank holder, which means that he or she ranked from top 1 to top 50 in the intermediate examination. And the third criteria is that income of parents should not be more than 3 lakh rupees per annum. So these are the eligibility criteria for this said scholarship scheme, and now we are going to discuss the benefits available within this scheme. So the scholarship amount of 2000 rupees per month will be granted to the students who are covered under this scheme for the period of 30 months or remaining period of your articleship, whichever is lower. So now as per new scheme, the maximum period of articleship can be 24 months. So maximum period of this scheme is also 24 months. So these are the benefits of this scheme. Now sir, अब बात आती है कि
ICI की इन स्कॉलरशिप के लिए हम अप्लाई कैसे करें? Now we are going to discuss how to apply for the scholarship scheme provided by the institute. So first of all, log on to your SSP portal. After login, below the student function, scholarship application form button is there. You can click on that. After coming to the next window, the most of the information will be auto-filled by the SSP portal. Then after, you have to provide bank account details of your account for the purpose of credit of scholarship amount to directly to your bank account. You also have to upload the scanned copy of cancelled check of your bank account. You have to provide for the family annual income in the said एप्लीकेशन फॉर्म। और यहाँ पास आपको मेक श्योर करना है कि अप टू 3 लाख तक का ये अमाउंट डालना है। अगर उससे ज्यादा का अमाउंट आपने डाला देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट, आपकी एप्लीकेशन जल्दी कैंसिल हो जाएगी। सो एंड यू आल्सो हैव टू फर्निश पैन कार्ड डिटेल्स ऑफ योर पेरेंट्स। आफ्टर दैट membership number of CA will be required to get it verified by the member of ICI. So at the last you can submit your application form by verifying with the OTP generated. After submitting your application form, you have to ask the member to get it approved from their side, whose membership number you have put in the form. So after verifying the parents' income certificate, members will approve the application form. Once approved by the member, it will send automatically to the regional office for review and approval. And believe me, जब ये application अपनी RO के पास जाती है approval के लिए, तो it takes more than a month. तो यहाँ पास अपन को थोड़ा सा patience रखने की जरूरत है, क्योंकि जैसे ही RO अप्रूवल के लिए हमारी जब एप्लीकेशन जाती है तो उस केस में 1 से 1.5 महीने का टाइम लगता है। So that's all about the application process for the scholarship scheme provided by the Institute of Chartered Accountants of India. And one important thing is that the scholarship amount will be credited in quarterly installments of 4,500 each to the beneficiaries, which means that जब अपन बात कर रहे हैं कि 1,500 पर मंथ का अपन को रिवॉर्ड मिल रहा है, तो वो जो रिवॉर्ड आएगा वो क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट पे आएगा और 3 महीने का एक साथ आएगा। इसका मतलब ऐसा था। एंड इफ यू हैव कमेंस्ड योर आर्टिकलशिप, then in that case you have to approve your attendance certificate quarterly whenever it was pending from the principal under whom you are registered as an article trainee. मेंबर के अंदर आप रजिस्टर्ड हो तो उनके पास रिक्वेस्ट आती है अटेंडेंस की कि आप उनके अंदर रेगुलरली सर्व कर रहे हो कि नहीं। तो वो चीज क्वार्टरली उनके पास रिक्वेस्ट जाती है, तो वो आपको अप्रूव करवानी पड़ती है अपने मेंबर से। जब आप आर्टिकलशिप करते हो उस केस पर ये प्रोसेस होती है। So it's a great initiative and I would like to express my gratitude to the ICI for their remarkable initiative in providing scholarship schemes to CA students. By offering such support, the ICI ensures that deserving individuals have the opportunity to pursue their dreams without being held back by financial constraints. This initiative truly empowers students to focus on their studies and excel in their professional endeavors, making a significant impact on the future of this profession. Now, अब बात आती है कि सर हम दोनों ही स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है या फिर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। हम एलिजिबल तो थे बट सिलेक्शन नहीं हुआ, पर हम इतने महंगे लेक्चर्स नहीं खरीद पा रहे हैं, तो क्या हम उस केस में कैसे डील करेंगे? So how should we purchase the expensive lectures at affordable prices? So my dear friends, many of the faculties have the strong support system, which means that they will help the students who are from lower income groups or meritorious students. But how a student can approach
to the faculties for the scholarship in the form of discount on lectures. Students need to draft the mail stating and highlighting the points whether they come from economically weaker section or not, whether he or she possesses the valid proof for that, whether they come from lower income groups, for that they have valid income certificate or not, whether they have good academic records. So based on merit scholarship criteria, they can award huge discount on the lectures. Students need to state why they can be selected for the scholarship provided in the form of discount of lectures. If any other genuine reason you can state, then you can draft it properly. So what are the attachments to be attached with the mail so that they can process further? So you all have to make sure that you ID proof, that is KYC documents, must be attached with the mail, academic records, that is 10th and 12th mark sheet, CA foundation and CA intermediate mark sheet, income certificate of your parents, economically weaker section certificate, that is EWS certificate if you have, then attach this with the mail. You can mail your content along with attachments to the official mail IDs of the respective faculties. So that's all about. हमने सीखा कि इतने एक्सपेंसिव लेक्चर्स को भी हम डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीद सकते हैं अगर हमको कोई भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं हुई है अभी तक तो. I think it wraps up most of the things, and that's all about the financial assistance available to the CA students. And one thing always keep in mind that those who dare to imagine the impossible, those who dare to imagine the impossible are the ones who break all the human limitations. In every field, you can take example of C.V. Raman, who had imagined the impossible and break all the human limitations. और याद रखिए, फाइनेंशियल स्ट्रगल आपके सपने को रोक नहीं सकता, बस सही इंफॉर्मेशन और सही सपोर्ट मिलने की जरूरत होती है. एंड वन थिंग आई विल मेक श्योर टू एवरीवन, जब भी आपको सीए की जर्नी में कोई भी रुकावटें आती है, देन वी आर ऑलवेज विद यू माय डियर फ्रेंड्स. एट द लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है. थैंक यू सो मच एवरीवन. नाउ आई एम लीविंग इट टू प्रीति मैम. Honestly, Narayan, I can say that इतनी information तो मुझे भी नहीं थी. I was not aware about the all these facilities available to the student. To the some extent, I was aware about it, but not all the facilities. And it was a quite a new thing for me also. Because students को बहुत सारे नहीं पता. I guess 4-5 days back I met a student और उसने मुझे सेम क्वेरी करी थी कि मैम आई लॉस्ट माय फादर, मेरे घर में कोई अर्निंग वाला नहीं है, तो मैं कैसे मैंने कॉम्पेंसेशन लेनी है, मैं कैसे ग्रांट एंड स्कॉलरशिप आईसीएसई से डिमांड कर सकती हूँ. तो आई जस्ट स्क्रॉल डाउन फ्रॉम द इंस्टीट्यूट वेबसाइट एंड ऑल कि कहाँ से मिल सकते हैं स्टूडेंट को. अब ऑब्वियसली आई गिव देम अ कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल आईडी. तो तब मैंने पूरा प्रोसेस पढ़ा था. आई वाज अवेयर बिकॉज मेनी इयर्स बैक दे हैव स्टार्टेड दिस स्कॉलरशिप थिंग, बट हाउ द प्रोसेस इज गोइंग, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, ये सब कुछ मुझे पता ही नहीं था. बट टुडे आई गेस मुझे आपका नंबर उनको देना पड़ेगा सो दैट दैट पर्सन कैन कांटेक्ट यू डायरेक्टली. Sure ma'am, I will help them. बिकॉज यू नो द प्रोसेस कम्प्लीटली. तो मुझे भी अभी थोड़ा और गो थ्रू करना पड़ेगा कि कहाँ से क्या उठाना है, कहाँ से क्या डॉक्यूमेंटेशन, एंड यू आर कम्प्लीटली इन द फ्लो ऑफ डिस्कशन. I already helped more than 50 students for this scheme, and उनका registrations भी सारी चीजें मैंने ही की थी, तो I have idea. Okay, one more question to Narayan. How you are connected with this? अब ऐसा होता है कि जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो वो पास ऑन होती जाती है कि आप अपने कनेक्शंस में कैसे कैसे लोगों को रखते हो. तो आई थिंक दैट कि मेरे कनेक्शंस में छोटे से छोटा बंदा भी है और बड़े से बड़ा बंदा भी है. तो एट द टॉप जो पीक में है उनसे भी डिस्कशन होता है, और जो लोअर इनकम ग्रुप से कॉल करते हैं, मतलब हर कैटेगरी के लोग से इंटरेक्शन होता रहता है. तो उनके लाइफ में क्या कैसा चल रहा है,
हाउ दे आर प्लानिंग देयर लाइफ, उनकी जर्नी कैसे चल रही है। तो मुझे पता है कि उनको फाइनेंशियल्स की सपोर्ट पड़ती रहती है, तो वो अपने फाइनेंशियल्स कैसे मैनेज करते रहते हैं। तो कुछ आइडिया मुझे उनसे सुनने को मिला, कुछ इन्फॉर्मेशन उनसे मिली, एंड कुछ मैंने अपने से रिसर्च की थी, तो बेस्ड ऑन दैट आई गॉट दिस इन्फॉर्मेशन। So after that, you started helping the students all around. यस मैम। Okay, this topic was completely very helpful. To the point, आपने सारी चीजें describe करी हैं. Tanya, you were listening very, ना, with very curiosity. Actually, ma'am, I was making the notes for the group now, so that audience which could not join today, they can catch up on the session. हाँ, obviously because this was much needed. Normal topics तो फिर भी हमने address किया, and Narayan insisted कि that I will address on this topic. Sir, I have a question. Can you please repeat the name of the first scheme that you discussed? Actually, क्या हुआ ना, वो मैंने note नहीं की थी पहले. It's शिक्षा सहयोग scholarship scheme which is provided by CA परिवार, and CA परिवार group started by CA Sanjeev Kumar Singhal sir, who is a central council member as well as chairman of Accounting Standard Board at Institute of Chartered Accountants of India. Okay, sir. Just wait a minute. I'm sharing my screen.